हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में हम लोग बीएनएसएस के एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ एंड आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स चाहिए बीएनएसएस की या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं एंड उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 101 हमारा बात करता है अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकेंड क्लास कैन पास अ सेंटेंस अप टू। फर्स्ट है इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, ये इनकरेक्ट है। इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और विद फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। 102 बात करता है द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास मे पास अ सेंटेंस ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग डैश रुपीज़ 1,000, 3,000, 5,000 और 10,000। करेक्ट ऑप्शन है डी, 10,000 रुपीज़। 103 बात करता है अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास में इम्पोज अ मैक्सिमम फाइन ऑफ ₹5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज़ या फिर 50,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 50,000 रुपीज़। अब है 104, 104 Which one of the following section of BNSS provide a sentence of imprisonment by the court of magistrate in a default of a fine? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 24, 25, 26 एंड 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेक्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 105 imprisonment in default of payment of fine can be awarded to run concurrently with the substantive sentence imposed in addition to the substantive sentence imposed। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 106 a magistrate convict an accused of a theft for 1 year imprisonment and 1,000 rupees fine. Maximum imprisonment for which accused can be sentenced to imprisonment in default of payment of fine shall be 1 year, 9 month। इसका करेक्ट ऑप्शन है 9 month। 3 month इज इनकरेक्ट, 6 month इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 विच वन ऑफ द फॉलोइंग section of BNSS is related to the sentence in case of convictions of several offences at one trial? करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 25 ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 26, 27, 28 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ several offence at one trial, in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a long period then। करेक्ट ऑप्शन है इसका 14 years, 17 years, 20 years। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, 20 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 अंडर BNSS विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई अ मर्डर केस? केस में से कौन सा मर्डर केस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, CJM, सेशन जज एंड एनी ऑफ द अबव केस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई अ केस पनिशेबल विद अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकेंड ऑप्शन है सेशन जज इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 which one of the following section of BNSS is related to mode of conferring powers? करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन नंबर 26, 25, 27 ये करेक्ट नहीं है। सेक्शन नंबर 26 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112
Which one of the following section of BNSS is related to withdrawal of powers? Withdrawal of powers का section कौन सा है? Section number 28. मतलब option number D is a correct option. Question number 113. Which one of the following section of BNSS provides for the powers of a superior officers of a police? Correct option है इसका A. Section number 30. Section number 114. Under section 31 of BNSS, every person is bound to assist a magistrate or a police officer in the taking or preventing the escape of any other person whom such a magistrate or police officer is authorized to arrest, in the prevention or suppression of a breach of peace, in the prevention of any injury attempt to be committed to a public property. करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी. ठीक है, मतलब ये सारे ही करेक्ट हैं बिकॉज प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस भी आएगा, प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू कमिटेड टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 115 बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड अ पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन ऑफेंसेस टू द पुलिस ऑफिसर. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. सेक्शन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 116. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक अ सर्टेन रिपोर्ट्स? करेक्ट ऑप्शन है बी. सेक्शन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 117. Arrest of person is covered under chapter number dash of the BNSS. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. चैप्टर नंबर 5. अंडर क्वेश्चन नंबर 118. अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS a police officer can arrest a person without an order from a magistrate and without a warrant? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. सेक्शन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 119. Section number 35 of BNSS deals with the option A. Arrest by magistrate. When police officer may arrest without warrant. Correct option है इसका B. When police may arrest without warrant. Question number 120. Police may arrest without warrant any person who commits in the presence of police officer a cognizable offense, who has been proclaimed as an offender by state government, and both A and B. So इसका correct option है C. Both A and B are correct. Question number 121. Under BNSS, police officer may arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant who commits a cognizable offense in the presence of a police officer who has been proclaimed as an offender either under this Sanhita or by order of the state government, who obstruct a police officer while in the execution of his lawful duty in all of the above circumstances. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. Question number 122. 122. When can police arrest a person without a warrant? In the case of cognizable offense only, in the case of proclaimed offender only, deserter from armed forces only, and option number D, all. The correct option है D, all of these above. Question number 123. A police officer may arrest somebody accused of an offense to prevent such person from committing any further offense for proper investigation of the case, to prevent tampering of the evidence, or all. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 124. A police officer has reasonable suspicion that K is involved in a murder case. He may
inform the superintendent of police, inform the magistrate of that area, arrest के without a warrant, obtain a warrant from the magistrate. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अरेस्ट विदाउट अ वारंट. Question number 125. In order to arrest two person who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the Union, the police officer shall take a prior sanction from dash commanding officer of that person, state government, central government. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 126 बात करता है इफ अ पर्सन फॉल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ अ नोटिस फॉर अपीयरेंस अंडर सेक्शन 35 क्लॉज नंबर 3 ऑफ BNSS or is unwilling to identify himself, the police officer. So correct option इसका है A, may, subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. Question number 127. Under section 35 clause number 7, no arrest can be made in a certain cases without a prior permission of an officer not below the rank of a इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी. क्वेश्चन नंबर 128. विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑन रिफ्यूजल टू गिव अ नेम एंड एड्रेस? करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, सेक्शन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 129. Procedure of arrest and duties of officer making a arrest is provided in section dash of BNSS. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेक्शन नंबर 36. Question number 130. Which one of the following is not necessary requirement for a proper procedure of arrest under section 36 of BNSS? The police officer shall bear and accurate the identification of his name. The police officer shall bear a visible and a clear identification of his name. The police officer shall prepare a memorandum of arrest to be countersigned by the person arrested. The police officer shall inform the person arrested that he has the right of legal counsel throughout the interrogation. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. Question number 131. The memorandum of arrest to be prepared by every police officer while making an arrest shall be attested by at least 2 witnesses, one of which shall be member of the family arrested. Attested by at least 2 witnesses, one of which is a member of the family of the person arrested and other a gazetted officer living in the locality where the arrest is made. Attested by at least 1 witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made and shall countersigned by the person accused. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. Question number 132. A memorandum of arrest of an arrested person is required to be signed and attested by one member of क्या, his family and one of his relative, the locality and one of his relative, other locality and one member of his family, his family, member of the locality and countersigned by the arrested person. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. Question number 133. If the memorandum of arrest is not attested by member of the family, then police officer making the arrest shall inform the person arrested. So इसका correct option है B, that he has the right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest. Question number 134. Under section 37 of BNSS,
स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश द कंट्रोल रूम only at a district level, state level, commissioner level and at a state and a district level. तो इसका correct option है D. Question number 135. Information mentioned under section 37B of BNSS shall be displayed in every police station at the district headquarter. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने 101 से लेके हम लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है. अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच.